आज हम अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अरिथमेटिक मीन को कैसे डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक मीन को x बार से डिनोट किया जाता है, x बार, दैट इज एज इट इज गिवन हियर। x बार से डिनोट करेंगे हम अरिथमेटिक मीन को। अब हम अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन को समझेंगे। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या फिर अनग्रुप डाटा के बारे में। सपोज करेंगे कि x1, x2 से लेकर xn तक एक सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस का सेट है। देन अरिथमेटिक मीन विल बी गिवन बाय x1 plus x2 plus x3 plus dash 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 plus xn upon n, and which will be equal to summation of I is equal to 1 to n up xi upon n. Now we will study about discrete frequency distribution. Suppose x1, x2, dash 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 sk are distinct observations with frequencies f1, f2, dash 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 fk as the corresponding frequencies. Then arithmetic mean is given by f1 x1 plus f2 x2 plus dash 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 fk xk upon f1 plus f2 plus dash 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 fk, which will be equal to summation of I is equal to 1 to k f1 x1 upon summation of I is equal to 1 to k fi, which will be equal to summation of I is equal to 1 to k fi xi upon n. Now we will study about continuous frequency distribution. Suppose C1, C2, Ck are k class intervals with f1, f2, dash 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 fk as the corresponding frequencies. Let x1, x2, dash 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 xk be the mid values of the class intervals. Then arithmetic mean is given by f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus dash 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 fk xk upon f1 plus f2 plus f3 plus dash 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 fk, which is equal to summation of I is equal to 1 to k fi xi upon summation of I is equal to 1 to k fi, which is equal to summation of I is equal to 1 to k fi xi upon n. अब हम आउटलाइज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइज की डेफिनेशन को समझेंगे। डाटा की कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी होती हैं जो यूजुअल पैटर्न से डिफर करती हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो यूजुअल पैटर्न से डिफर करती हैं उनको हम आउटलाइज बोलते हैं। आउटलाइज के प्रेजेंस में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने से हमें फॉल्टी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आउटलाइज के प्रेजेंस वाले अरिथमेटिक मीन को ज्यादा रिलायबल नहीं माना जा सकता। Thus, interpretation and conclusion based on such a mean will not be that much reliable. कहने का मतलब यही है कि आउटलाइज के प्रेजेंस वाले अरिथमेटिक मीन को ज्यादा रिलायबल नहीं माना जा सकता। Now we will study about the concept of trimmed mean. Arithmetic mean obtained by ignoring lowest alpha percent as well as highest alpha percent observations is called alpha percent trimmed mean. Concept of trimmed mean is useful to overcome the difficulty in computing the arithmetic mean in the presence of outliers. Outliers के presence में correct arithmetic mean को calculate करने में difficulties आती हैं। ऐसी difficulties को overcome करने में trimmed mean का concept काफी helpful होता है। Now we will study about the properties of arithmetic mean. The algebraic sum of deviations of observations from their arithmetic mean is 0. That is, summation of I is equal to 1 to n xi minus x bar is equal to 0. This is the mathematical form of this property. The sum of squares of the deviations taken from arithmetic mean is minimum. That is, summation of I is equal to 1 to n xi minus x bar का whole square is less than equal to summation of I is equal to 1 to n xi minus a का whole square, where a belongs to set of real numbers. Now we will study about the property of change of origin and scale. If ui is equal to xi minus b upon k, which implies that u bar is equal to x bar
minus b upon k. Here b and k belongs to set of real numbers. अब हम मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कंबाइंड ग्रुप्स का मीन कैसे निकाला जाता है. सपोज करते हैं एक ग्रुप जिसका साइज n1 है, उसका अरिथमेटिक मीन x1 बार है. n1 साइज के ग्रुप का अरिथमेटिक मीन है x1 बार. उसी तरह दूसरा ग्रुप लेते हैं जिसका साइज n2 है और उसका अरिथमेटिक मीन x2 बार है. फिर कंबाइन मीन होगा xc बार, जिसको हम which will be given by xc बार is equal to n1 x1 बार plus n2 x2 बार upon n1 plus n2. अब हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के जनरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. मान लेते हैं कि हमारे पास k ग्रुप्स हैं, एंड ith ग्रुप का साइज ni है और मान लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन है xi बार. अरिथमेटिक मीन को हम xi बार मानेंगे और i is equal to 1 2 and dash up to k. Then xc bar, which is arithmetic mean of all k groups combined together, is given by xc bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus dash plus nk xk bar upon n1 plus n2 plus dash nk, which is equal to summation of I is equal to 1 to k ni xi upon summation of I is equal to 1 to k ni. अब हम अरिथमेटिक मीन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जो कहती है कि अरिथमेटिक मीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के बीच में लाई करता है. दैट इज मिनिमम ऑफ x1 x2 dash and up to xn is less than equal to x bar, which is less than equal to maximum of x1 x2 dash xn. अब हम अरिथमेटिक मीन की कुछ लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानेंगे. अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा पे एप्लीकेबल होता है. दैट इज इट इज एप्लीकेबल ओनली टू क्वांटिटेटिव डाटा. इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस. अरिथमेटिक मीन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. Means arithmetic mean is significantly changed or distorted by the presence of very high or very low values in a data set. In other words, extreme values disproportionately influence the results of calculations, making it less representative of the typical or central tendency of the data. It cannot be computed for frequency distribution with open-end classes. In a frequency distribution with open-end classes, arithmetic mean cannot be accurately calculated. This is because the arithmetic mean relies on having a complete set of data points with non-values, and open-ended classes lack the necessary upper or lower bounds to include the values in the calculation. Arithmetic mean cannot be determined graphically. Arithmetic mean को हम graphically calculate नहीं कर सकते. And the last limitation is sometimes arithmetic mean may not be an actual observation in a data. This is because the mean is calculated by summing all the values and the dividing by the number of values. This process can result in a value that is not one of the original data points, especially when dealing with continuous data or when outliers are present. Thank you and have a nice day.